Till now, we have studied three different definitions of economics. First by Adam Smith, that was wealth oriented. Second by Professor Alfred Marshall, that was welfare oriented. And third by modern economist Lionel Robbins, that was scarcity oriented definition of economics. These were three different approaches to look at economics. इकॉनॉमिक्स कडे बघायचे हे अलग अलग विचार होते. नाउ वी विल सी टू ब्रांचेस ऑफ इकॉनॉमिक्स, माइक्रो इकॉनॉमिक्स एंड मैक्रो इकॉनॉमिक्स. In Greek language, micro means small and macro means large. Professor Ragnar Frisch in 1933 used these two concepts for the first time for economics. First, let us see microeconomics. Micro means small. So microeconomics deals with, microeconomics कशाशी डील करते, कसला अभ्यास करते, इंडिव्हिज्युअल व्हेरिएबल, एक व्हेरिएबल, एक फॅमिली, एक वर्कर, एक फर्म म्हणजे कंपनी, एक इंडस्ट्री, सिंगल युनिटची स्टडी करते. दॅट इज माइक्रो इकॉनॉमिक्स. After studying three definitions of economics, we are now studying two branches of economics. कुठले कुठले branches? Microeconomics and macroeconomics. Who coined the terms? हे terms सर्वात पहिले कोणी यूज केले? Ragnar Frisch. When? In 1933. Okay, fill in the blanks. Objective हेच येणार. त्यानंतर what is microeconomics and what is macroeconomics? Micro and macro are the words from Greek language. Micro means small and macro means large. म्हणजे microeconomics is the study of छोटे units and macroeconomics is total economy level, total country level study of economics. Okay. आज स्टडी करेंगे microeconomics definition given by Kenneth E. Boulding. पहले टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करते हैं, फिर उसको समअप करते हैं. लेक्चर के साथ साथ इफ यू स्टार्ट टॉकिंग ना, तुम्ही पण प्रॅक्टिस करत गेले, लेक्चर ये 5-10 मिनट में ही आपकी डेफिनेशन आराम से बायट हो जाएगी. गिव इट अ ट्राई. केनेथ बॉल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिक्युलर फर्म, पर्टिक्युलर हाउसहोल्ड. फर्म आहे कंपनी, एक कंपनी, पर्टिक्युलर्स मीन्स विशिष्ट, एक कंपनी, पर्टिक्युलर हाऊसहोल्ड, एक फॅमिली. मीन्स एक कंपनीची स्टडी करायची. एक कुठली कंपनी आहे? पार्ले कंपनी. तो विल ओनली स्टडी इकॉनॉमिक्स ऑफ पार्ले कंपनी, फक्त त्यांची स्टडी करणार. एक कोई कंपनी पकडली, विप्रो कंपनी, एकाच कंपनीची स्टडी करणार, सिंगल. एक किसी का घर पकड़ लिया, मिस्टर पाटिल एंड परिवार, तो सिर्फ उनके इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे. दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड. इजी. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड. उसके आगे इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम. इंडिविजुअल एक, इंडिविजुअल प्राइजेस, कांदा, तो सिर्फ कांदे की प्राइस कैसे डिसाइड हो रही है, इंडिविजुअल प्राइजेस. पार्ले जी की प्राइस कैसे तय होती है, कैसे फाइनल होती है कि इस बिस्किट की प्राइस कितनी होनी चाहिए, इंडिविजुअल प्राइजेस. इंडिविजुअल कोई भी कमोडिटी है, कोई भी सिंगल कमोडिटी है. व्हाट इज द रेट ऑफ पानीपुरी, लास्ट रेट ऑफ पानीपुरी बिफोर लॉकडाऊन. सर एका कमोडिटीची प्राइस काय आहे ते स्टडी करते मायक्रो इकॉनॉमिक्स. इंडिव्हिज्युअल प्राइजेस, वेजेस, वेजेस आहे, कोणी काम केले की आपण त्यांना मजदूरी देतो, दैट इज वेजेस, मजदूरी देतो. जो मजदूरी देते हैं दैट इज वेजेस. तो कड़िया को कितना मजदूरी देंगे, तो उसकी स्टडी करेंगे, एक की, सिंगल. तो दैट इज स्टडी मटेरियल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. प्राइजेस, वेजेस, इनकम. एक आदमी का इनकम कितना है, एक कंपनी का इनकम कितना है, एक एक एक. माइक्रो मीन्स एक, सिंगल, इंडिविजुअल, यूनिट. ओके. पर्टिकुलर. अब तक कितना हुआ? Microeconomics is study of particular firm, particular household, individual prices, wages, income. Done. एंड ला है individual industries, particular commodities.
इंडिव्हिज्युअल मीन्स वन इंडस्ट्री. एक कंपनी आहे पार्ले कंपनी, इट प्रोड्युसेस बिस्किट्स. ब्रिटानिया कंपनी बिस्किट बनवते, प्रिया कंपनी बिस्किट बनवते. तर ऑल बिस्किट कंपनीज आले, दॅट इज बिस्किट इंडस्ट्री. सिंगल कंपनी आणि पुरी झाली तर दॅट इज इंडस्ट्री. मग मायक्रो इकॉनॉमिक्स स्टडीज इंडिव्हिज्युअल इंडस्ट्री, पर्टिक्युलर कमोडिटी. कुठली एकच कमोडिटी. बिस्किट पकडेल तर पुरी बिस्किटची स्टडी, ट्रॅक्टर पकडले पुरे ट्रॅक्टरची स्टडी, मोबाईल पकडले पुरे फक्त मोबाईलची स्टडी. ओके, तो इंडिव्हिज्युअल इंडस्ट्री, पर्टिक्युलर कमोडिटी. एक बार साथ में. अकॉर्डिंग टू केनेथ बाउल्डिंग, microeconomics is study of particular firms, particular households, individual prices, wages, income, individual industries, particular commodities. माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी करती है एक फर्म, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री, एक हाउस होल्ड, एक कमोडिटी, एक सिंगल इंडिविजुअल. ओके. Microeconomics is the study of particular firms, particular households, individual prices, wages, income, individual industries, particular commodities. Easy है. Let us sum up. Two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. Who coined the terms for the first time? Ragnar Frisch. When? 1933. ये वर्ड्स कहां से आए? माइक्रो एंड मैक्रो आर द वर्ड्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ होल यूनिट्स, होल इकोनॉमी. एंड देन सिंपल वाली डेफिनेशन बाय केनेथ ई बाउल्डिंग. Microeconomics is the study of particular firm, particular household. Microeconomics is the study of particular firm, particular household. Individual prices, wages, income. Individual prices, wages, income. Individual industries, particular commodities.